हम देख सकते हैं कि धेनुक बहुत क्रुद्ध था। So he was angry and he was also making angry noises. न केवल क्रोध था बल्कि वो क्रोध में आवाजें भी निकाल रहा था। So why do we get angry? तो हम क्रोधित क्यों हो जाते हैं? पूर्ण करने के लिए वो क्रोधित हो पड़ा। And with that anger, then he is trying to still fulfill his desire. He is trying to now kill the intruder. तो उस क्रोध के वश होकर वो अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है और जो बाधक वस्तु है उसको खत्म कर देना चाहता है। And in the Shastra we have it very nicely described actually how it manifests. और शास्त्र में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से प्रकट होता है। Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। So these are the stages what happens to us if we don't control our desires. तो ये अलग-अलग स्तर हैं जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करते तो वो प्रकट होती है। So if we think that we deserve so many things, everything, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए ही है, मुझे तो मिलना ही चाहिए, that I am the center of the universe and that everybody is to respect me and everybody is to obey me, यदि हम सोचते हैं कि हम सृष्टि के केंद्र हैं, सभी को मेरा सम्मान करना चाहिए, सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, then we get frustrated तो हम निराश होंगे because it's not going to happen. क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। Balaram, he completely disregards Dhanuka. बलराम जी ने धेनुका का एकदम अवहेलना कर दी And that's why he gets angry. इसलिए धेनु क्रोधित हो गया। So if somebody challenges our fulfillment of our desire, we get angry. तो यदि हमारी इच्छा में भी कोई अवरोधक बनता है तो हम भी क्रोधित हो जाते हैं। And then what we see, sometimes the anger may scare someone and your desire may get fulfilled. तो फिर हम क्या देखते हैं कि कभी-कभी आपके क्रोध से कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है और आप अपनी इच्छा पूर्ण कर पाते हैं। But most of the time not. लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता। But so you are angry because you want your desire to be fulfilled, but it's not happening. So then the greed to get the desire fulfilled increases. यदि आप क्रोधित होते हैं फिर भी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो फिर आपकी उस इच्छा को प्राप्त करने की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। So Kama, Krodha, Lobha. Now even with the greed, it's no guarantee that you get your desire fulfilled, but your emotions are very high. तो काम, क्रोध और लोभ, भले ही आपके अंदर लोभ जनित हो गया है लेकिन फिर भी कोई इसकी सुनिश्चितता नहीं है कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। Your intelligence is working less and less. और आपकी बुद्धि और अधिक कम कार्य करने लगती है। You are more on the mental platform. और आप मानसिक स्तर पर आ जाते हैं। And now you want to get it done by any means. और आप अपनी इच्छा को किसी भी रूप से पूर्ण करना चाहते हैं। But it's still not happening. Still it is not happening. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। So Kama, Krodha, Lobha, and then Moha. तो काम, क्रोध, लोभ और फिर उससे मोह होता है। We get illusioned. हम भ्रमित हो जाते हैं। It's like everything else becomes less important. दूसरी सारी वस्तुएं हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। The important thing, the only thing which you want now is to get your desire fulfilled. आपके लिए केवल एकमात्र महत्वपूर्ण वस्तु है कि आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए।
But that's even worse for you लेकिन ये आपके लिए और भी ज़्यादा खराब है, because it's not going to happen. क्योंकि ऐसा होने वाला तो है नहीं। And you being very emotional, you are unable now to utilize your intelligence at all. और अभी आप भावुक अवस्था में अपनी बुद्धि का बिल्कुल ही उपयोग नहीं कर पाते। And because it's not happening, your desire is not being fulfilled, you get crazy. और क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो आप पागल जैसे हो जाते हैं। And then, now in that state, you get completely lost. और उस अवस्था में आप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। So, you can prevent it. आप चाहे तो उससे बच सकते हैं। You can prevent it if you don't act on that your desire is not being fulfilled. आप उससे बच सकते हैं यदि आप इस स्तर पर कार्य नहीं करें कि मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। Okay, you wanted something, but didn't happen. ठीक है, आप ये चाहते थे लेकिन वैसा नहीं हुआ। You have a choice to make. तो आपके पास कोई विकल्प है। You either accept it. या तो आप उसे स्वीकार कर लें। Okay, what to do? क्या Yeah, कर सकते हैं? I wanted it. मैं तो चाहता था। Like you come to a kitchen for prasad and you are expecting some paneer sabji. जैसे आप प्रसाद पाने के लिए पाकशाला में जाते हैं और आप आशा करते हैं कि पनीर की सब्जी होगी, But you get khichdi. लेकिन आपको खिचड़ी मिलती है। Then what do? तो आप क्या करेंगे? You either just say, well, it's prasad, okay, it's fine, I'll eat it. तो आप सोच सकते हैं कि अरे ये भी तो प्रसाद ही है तो उसको स्वीकार करते हैं और ठीक है। Or you get angry and then start shouting at the cook, why you didn't make the paneer sabji? या फिर आप क्रोधित हो सकते हैं और जो रसोइया है उसके बोल सकते हैं कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं बनाई तुमने। And whatever he says, you are not going to be satisfied with it, likely. और वो रसोइया जो कुछ भी कहेगा आप उससे संतुष्ट तो नहीं होंगे। So, but I want the paneer sabji. और आप कहेंगे नहीं मुझे तो चाहिए पनीर की सब्जी। And then, okay, I'll make it myself, or make it, otherwise I'll punish you, or no, just you start creating just so much emotions for nothing. और आप फिर वहाँ से अलग अलग भावनाएं प्रकट करते हैं, ठीक है मैं खुद ही बना लूँगा या उसको निर्देश करते हैं अभी बनाओ, तो इससे क्या होगा? Every time you have a choice to make. हर समय आपके पास विकल्प होता है। You have the free will to make it. आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। You accept the situation and be calm, or you don't accept the situation and start getting angry. आप परिस्थिति को स्वीकार करके शांत रह सकते हैं या फिर क्रोधित हो सकते हैं। But when you start getting angry, then you are going to enter into the process of that kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. यदि आप क्रोधित होंगे तो आप अलग अलग क्रमिक रूप से काम क्रोध लोभ मोह में फंस जाएंगे। And it has nothing to do with devotional service. और इसका भक्ति से कुछ लेना नहीं है। So, therefore we have to be very careful what we desire. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारी इच्छाएं किस प्रकार की हैं। So like we mentioned yesterday, we are supposed to remain dhira. जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि हमें धीर बनना है। And we should practice and trinadapi sunichna, taradapi saishna, amanina manadena. और हमें घृणादपि सुनिश्चित करोगे सहिष्णुता मानने का अभ्यास करना है। So be humble, be tolerant, be respectful, and be selfless. Selfless. तो हमें विनम्र बनना है, सहिष्णु बनना है और स्वार्थी नहीं बनना है। So, as we mentioned, they are not easy, but they are not impossible. This quality to practice, to develop. जैसे चर्चा हुई ये आसान नहीं है लेकिन ये असंभव नहीं है, ये गुण और आवश्यक है भक्ति में सेवा करना। But they are necessary if we want to develop kirtanya sadahari. लेकिन यदि हम हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहते हैं तो ये गुण बहुत आवश्यक है। So we have a choice to make. Every single moment we are making choice.
तो ये हमारा खुद का चुनाव है, हर क्षण हम चुनाव करते हैं। You wake up in the morning and you make a choice. आप सुबह उठते हैं और आप विकल्प चुनते हैं। Are you going to wake up or not? आप सुबह उठेंगे या नहीं? No. Are you going to go for Mangalarati or not? आप मंगल आरती में जाएंगे या नहीं? No. Are you going to chant your rounds or not? आप अपने जप करेंगे या नहीं? The mind can create unlimited excuses why you should not do it. मन अलग अलग बहाने देगा कि क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए। The intelligence will try to pursue you to do it because it's right. और बुद्धि जो है मन को मनाने का प्रयास करेगी कि उसे करना चाहिए क्योंकि ये सही है। Intelligence can understand what is right and wrong, not mind. बुद्धि सब निर्णय कर सके क्या सही क्या गलत है, मन नहीं कर सकता। Mind only understand and what I like and don't like. मन केवल यह समझता है कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है। Whom do you listen? आप किसको सुनेंगे? Your choice. ये आपकी स्वतंत्रता है। You can say it's impossible. आप कह सकते हैं कि ये तो असंभव है। Arjuna says, no, to control the mind, better than to control the mind, it's easier to control the wind. अर्जुन भी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने से अपेक्षा तो वायु को नियंत्रित करना सरल है। But you see, you can control the wind, right? You can put on the fan, put it off. You can control the wind. तो आप देख सकते हैं कि आप वायु को नियंत्रित कर सकते हैं पंखा चला के। So there is no wind, you put it on. There's too much wind, put it off. बहुत ज़्यादा हवा है तो बंद कर दीजिए पंखे को, नहीं है तो चला दीजिए। So anyway, point is, controlling the mind is not easy, but it's not impossible. तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सकता है कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। But each and every one of us individually, we have to make a choice. Do we want to control the mind, or are we happy with letting the mind be free? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी स्वतंत्रता है कि हम चाहते हैं कि हम मन को नियंत्रित करें या मन को स्वच्छंद छोड़ दें। It's your choice, but the consequences you don't choose. ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा उसका आप चुनाव नहीं कर सकते। So we should be careful about then how we proceed with our free will, with our desires. तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे क्रियान्वित कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता का कैसे उपयोग कर रहे हैं। If we say that we are devotees and we want to practice devotional service, यदि हम कहते हैं कि हम भक्त हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, then we should definitely control the anger. तो इसलिए तो हमें निश्चित रूप से क्रोध पर नियंत्रण पाना होगा। Vacho vegam, manasa krodha vegam, jihva vegam, udarapashtha vegam, right? So Rupa Goswami instructs us, we should control. तो श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशम के पहले श्लोक में हमें निर्देशित करते हैं कि हमें इन चीज़ों को नियंत्रित करना है। But if you don't, you will probably get many people understanding and supporting you. Yeah, okay, he made you angry, then you should take revenge on him. तो हो सकता है कि कई लोग आपकी बात में सहमति रखते हैं कि हाँ उसने गलती की और आप उसमें क्रोधित हो गए, या फिर आपको उससे बदला लेना चाहिए। Somebody says something about you and you get so angry at the person. आपके बारे में किसी ने कुछ कहा और आप उसके ऊपर इतने क्रोधित हो जाते हैं। Now, you are angry and he doesn't even know about it. Possibly. तो आप क्रोधित हैं, लेकिन जिस व्यक्ति पे आप क्रोधित हैं संभवतः वो जानता भी नहीं है कि आप उस पर क्रोधित हैं। Maybe he didn't even mean anything against you, but you took it like that and you got angry. हो सकता है कि उसका कोई अभिप्राय ही नहीं था कि आपको क्रोधित करने का, लेकिन आपने उसको इस प्रकार से ग्रहण किया। And you are thinking about like a revenge, what you should do, how you should punish him for saying something like that. और आप प्रतिशोध की भावना में सोच रहे हैं कि कैसे मैं उससे बदला लूंगा और उसे मैं दंडित करूंगा, उसको कैसे ऐसा कर सकता है। And constantly thinking about
what to do to him, so then he suffers. और हर समय आप चिंतन कर रहे हैं कि क्या करूं उसको ताकि वो उसको सबक मिल जाए. Constantly thinking about the revenge. Who is suffering? और हर समय आप यही चिंतन कर रहे हैं कैसे प्रतिशोध दिया जाए, तो उसमें कष्ट कौन भोग रहा है? You are angry and you are suffering. आप क्रोधित हैं और आप ही कष्ट भोग रहे हैं. The person who is supposed to be suffering because he supposedly offended you, then he doesn't know even about it and he is so peaceful. जो व्यक्ति जिसने आपको क्रोध दिलाया है, जिसने अपराध किया है, वो तो उसको तो कोई कष्ट ही नहीं है, वो तो शांत है, उसके तो मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं है. What's the point of being angry? तो क्रोधित होने का क्या दुख बनता है? So if somebody upsets you somehow, then just work it out. यदि आपको कोई निराश करता है तो उसको सुलझा दीजिए. Don't hold a grudge. Don't think of some revenges. तो प्रतिशोध की भावना मत रखिए. Because then being angry means it's very emotional and you cannot practice devotional service. You are thinking about yourself only. क्रोध में व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है, उस समय व्यक्ति वो भक्ति सेवा नहीं कर सकता. So these are some aspects of anger which we should know about, and we should make the right choice to avoid. तो ये क्रोध के कुछ पहलू हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें सही चुनाव करना चाहिए. So everybody has the choice to make. तो हर एक व्यक्ति के पास ये स्वतंत्रता है. But everybody takes responsibility for every choice they make. तो जो भी हम चुनाव करते हैं उसके लिए फिर हमें परिणाम भी भुगतना होता है. You cannot blame anybody else for your choices. आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने चुनाव के दोषी नहीं ठहरा सकते. It sounds good, but it's not working like this. सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. Krishna, he knows what you did. कृष्ण जानते हैं कि आपने क्या किया. You can lie to everybody else, but Krishna knows. आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन कृष्ण सब जानते हैं. So we should try to then avoid any situation which we have to regret later on. तो हमें ऐसी कोई भी परिस्थिति से बचना चाहिए जिसके लिए बाद में हमें पश्चाताप होगा. And if we make some mistake and we offend, especially Vaishnava, और यदि हम कोई त्रुटि करते हैं और खास करके किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं, then we should seek his forgiveness. तो उस स्थिति में हमें क्षमा याचना करनी चाहिए. And if we see that we made somebody angry and we didn't intend to make somebody angry, लेकिन यदि हम देखते हैं कि हमने किसी को क्रोधित कर दिया है लेकिन हमारा ऐसा कोई आशय नहीं था, explain yourself. तो आपको उसे समझाना होगा. No. Because of you not clearly explaining yourself, then he is angry and he is suffering because of you. क्योंकि आप उसे समझा नहीं रहे हैं और आपकी वजह से वो क्रोधित हुआ है, तो वो आपकी वजह से ही कष्ट भोग रहा है. And then you end up like Dhanuka. तो परिणाम धेनुका जैसा होगा. No. Anyway, Hare Krishna. If questions? तो किसी को कोई प्रश्न? Humbleness is considered very auspicious, the best jewel for the Vaishnavas. At the same time, ego is one of the biggest enemy. Biggest? Ego Is one of the biggest enemy. Okay, enemy. Yeah. So now we see in the material circle usually people talk about self-respect, swabhiman. So there is humbleness
there is ego and there is self-respect. But I just want to have always self-respect, and if it is true that someone should be swabhimani, then what is the connection between these three? Humbleness, ego, and self-respect. Okay, how do you define self-respect? I don't know, that's why I am asking. How to define self-respect? You're asking for a definition of a self-respect. Well, I don't know what they mean by that. Okay. Usually people say, if you have something great, you should respect it. Sometimes they say... To be like a proud? Proud. Pride. Some rights are there, Human rights. you should be respected at least, you should be treated modestly. So, okay, respect others, but what is the meaning of like a self-respect? What do you respect on yourself? Okay, you should respect. See, the ego, as you said, biggest enemy, it's not true. Because the ego, the real ego is, I'm Krishna's servant. The false ego, the ahankar, that's the problem which covers our real ego. तो एक प्रश्न था कि हमें विनम्र होना चाहिए क्योंकि अहंकार हमारा बहुत बड़ा शत्रु है और हमें स्वाभिमान भी होना चाहिए। तो स्वाभिमान का अहंकार और विनम्रता के बीच में क्या इसकी रोल है? महाराज जी कह रहे हैं कि अहंकार जरूरत नहीं है कि हमारा शत्रु ही है, मिथ्या अहंकार हमारा शत्रु है। वास्तविक अहंकार इतने कृष्ण के पास हो वो हमारा शत्रु नहीं है। So now, yes, the false ego now bewilders because now we think we are this body. मिथ्या अहंकार हमें भ्रमित करता है क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। And the false ego, together with the anarthas which are in the heart, then start producing through the mind the desires. और मिथ्या अहंकार हृदय में स्थित अनर्थों के साथ मिलकर बहुत सारे प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। So now the self-respect, I don't know what they mean by it. I didn't hear it. So, but if you say like some pride, so they also probably mean you should become more selfish. तो स्वाभिमान की लोग बात करते हैं, मुझे पता नहीं उससे उनका क्या अभिप्राय होता है, लेकिन उससे हो सकता है कि वो और ज़्यादा अभिमानी भी होते हैं। No, it's like a self-centered. और वो स्व केंद्रित बन जाते हैं। It's about you. You should demand respect. क्योंकि उसमें हम अपने लिए आदर की अपेक्षा रखते हैं। But the respect, how you should get, is not by demanding respect, but it's commanding respect. तो हम आदर जो है दूसरे से जबरदस्ती नहीं ले सकते, हमें ऐसा आचरण करना होता है जिससे स्वतः वो व्यक्ति हमारा आदर करे। Means you act such a way so then people will respect the ways you are acting. तो हमारा आचरण देख के लोग हमें आदर करते हैं। That's commanding respect. But demanding is, hey, you don't know who I am? No. So I don't know. People nowadays they have so many weird ideas. तो दूसरा तरीका है कि हम बोलते हैं कि अरे तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, और हम आदर की अपेक्षा करते हैं। इस तरीके से लोगों की कई सारी धारणाएं होती हैं। Now, in some countries, now they allow marriages to oneself. किसी देशों में स्वयं से विवाह भी स्वीकृत है। You love yourself the most, so you can marry yourself. क्योंकि आप स्वयं से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए आप स्वयं से ही विवाह करते हैं। So it's an official ceremony. So you will be married to yourself. और उसमें वो अनुष्ठान भी करते हैं जिसमें वो स्वयं से विवाह करते हैं। There is no limit what the mind can come up with. तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि मन क्या-क्या अलग-अलग विचार बना सकता है। No, weird and weird things can be produced by the mind what you should do. और मन इस तरीके से कई विचित्र विचार लाता है कि क्या-क्या किया जा सकता है। Somebody wants to
marry, some guy, I think he married a clock. Clock, yeah, watch. एक व्यक्ति ने घड़ी के साथ विवाह किया। It's like, how far can it go? तो आप कुछ भी कर सकते हैं। No. So, see, respect, yes, you should draw the respect from others by doing your duties properly, doing everything what you should by achar. तो आपको सम्मान मिलता है जब अपना कर्तव्य आप करते हैं और आप अपना आचरण सही रखते हैं। And become confident that when you are doing the right thing, then you are pleasing your superiors, you are pleasing Guru, you are pleasing Krishna. और जब आप गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करते हैं अपना कर्तव्य करके, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। And then everything will be auspicious, you will be happy. और इस तरीके से सब चीजें शुभ होती हैं और आप प्रसन्न रहते हैं। But if you try to do it your way and then you are proud of anything you do, then you will demand so much for yourself. You will think you deserve everything, the whole world, but you won't get it. लेकिन आप चीजें अपने अनुसार करते हैं और आप अहंकारी हो जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों की अपेक्षाएं रखते हैं। ऐसा लगता है आपको कि पूरा विश्व आपकी आदत करे। People will not give you the respect you think you deserve. तो लोग आपको उतना आदर नहीं दे सकते जितना आप अपेक्षा रखते हैं। And then you will be not satisfied. और इस तरीके से आप असंतुष्ट रहेंगे। So no. You will be always disturbed. Why is he not respecting me? No. Why is not recognizing my greatness? तो आप हमेशा कुंठित रहेंगे कि ये व्यक्ति मेरा आदर क्यों नहीं कर रहा है, मेरी महानता को क्यों नहीं समझ पा रहा है। And he also not, and he also not. What is this? No. वो भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये सब क्या है? You get always disturbed, but you cannot do anything else. इस तरीके से आप हमेशा कुंठित रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। So, no. I don't know. So if someone follows his responsibility and duties properly, he is good in conduct, he is good in reciprocation, still a person with whom he has or whom he had would respect, reciprocate properly. Still if someone is disrespecting again and again and again, then what one should do? यदि हम अपना कर्तव्य करते हैं और आचरण भी सही रखते हैं और विनम्र रहते हैं और दूसरों को इसके प्रति हम इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यक्ति बार बार हमारा अनादर करे, तो हमें क्या करना चाहिए? See, the main thing, don't get disturbed. Because now, maybe you have hurt that person badly. And no, he is not respecting you. And he will never respect you again. Your relationship is finished. मुख्य बात है कि विचलित नहीं होना है कि हो सकता है कि उस व्यक्ति को चोट लगी हो आपसे और वो आपका अभी सम्मान नहीं कर रहा है क्योंकि आपका संबंध टूट गया है। Because for a relationship you have to have two people. तो संबंध में दो व्यक्ति होते हैं। You cannot have one-way relationship. तो एक तरफा संबंध नहीं होता। Just because you want to have friendship, it doesn't mean the other person wants to, and you cannot have friendship. तो आप हो सकता है मित्रता चाहते हो किसी व्यक्ति से, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता है, तो आपके बीच में मित्रता नहीं हो सकती। So, first of all, then don't be disturbed by it. सर्वप्रथम आप विचलित मत होइए। If it bothers you, then ask. No, what is it that actually makes him disrespect you? यदि आप वास्तविकता में जानना चाहते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों वो व्यक्ति आपका अनादर कर रहा है। And if he says, then you know what to work on. और यदि वो बताता है तो आप उसको सुलझा सकते हैं। But if you are doing everything which you are supposed to do and still being disrespected and he is not saying anything, then just leave it.
लेकिन आप सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, फिर भी वो व्यक्ति आपका अनादर कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए. Because you see, people, when they see that something may not be right, then you create a doubt. Doubt. When you see that something is not right, like in somebody's behavior, you have a doubt. यदि आप किसी का व्यवहार गलत देखते हैं तो आपके मन में संशय उत्पन्न होता है. Now, when there is a doubt, you can explain it. यदि कुछ संशय है तो आप उसको वर्णन कर सकते हैं. So doubt means it can go either way. You have a doubt. संशय जो है दोनों दिशाओं में जा सकता है. So you have a doubt whether the person did the right thing. आपको संशय है कि क्या उसने सही किया. He explained himself and then you say, oh, okay, yeah, I understand. And your doubt is dispelled. आपने संशय ऊपर प्रश्न किया और उसने बताया तो आप समझ गए कि हाँ ये सब ठीक था. Right? Now, if the person doesn't deal with the doubt, if you don't deal with the doubt, यदि व्यक्ति समाधान नहीं करता है संशय का, then it comes to misgiving. Okay, see, doubt is that you doubt, you don't know and you want to know. संशय मतलब आप नहीं जानते और आप जानना चाहते हैं. Misgiving is you know he is wrong. और दूसरा और आप सुनिश्चित हैं कि वो गलत है. He can prove it to you that he is not. Many people can prove it to you, but no, he is wrong, I know. And you cannot change it. हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति सिद्ध कर दे कि वो गलत नहीं है, लेकिन आपने मनोधारणा बना दी है कि नहीं ये तो गलत ही है. So if you develop misgiving towards someone, then you cannot change it back. No, you know whatever he does, it's wrong. यदि किसी ने आपके प्रति ऐसी मनोधारणा बना ही दी है कि आप गलत हैं, तो आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते. In fact, you don't care even not to see if he does it right or wrong. और वास्तविकता में वो इसकी चिंता ही नहीं करता कि वास्तविकता में उसने कोई गलती की भी है कि नहीं. You know he is wrong. आपको विश्वास होता है कि उसने गलत नहीं किया. You can be wrong, but it doesn't matter. You know he is wrong. That's misgiving. तो इस परिस्थिति में उसने पक्की धारणा बना ली कि आप गलत ही हैं. So when you or someone not develops misgiving towards someone, it's very difficult to deal with that. तो यदि आपके प्रति किसी ने इस प्रकार की मनोधारणा विकसित कर ली है तो उसका समाधान कर पाना कठिन है. You cannot convince such a person that no, you are right. ऐसे व्यक्ति को आप नहीं मना सकते कि आप सही हैं. So just leave it. तो आपको छोड़ देना चाहिए. Maintain like a neutral relationship and that's it. तो आपको उससे दूरी का संबंध बना लेना चाहिए. Don't be disturbed by it. No, just do your duties. No, whatever you need to do, and that's how it should go. आपको विचलित नहीं होना चाहिए. If maybe he after very very long time realizes something, sees, then maybe he will accept that actually you are not wrong. Maybe you are right. तो हो सकता है कि कई वर्षों बाद उसको ये अनुभव हो कि आप गलत नहीं थे, आप सही थे. It may come, may not. ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. But don't get disturbed from the position of being dhira. No, just what to do. You tried everything what you can to explain yourself, to convince him, to do things right. But if he still doesn't sees that that you are right or that he should give you any respect, just leave it. तो लेकिन आपको अपनी धीर स्थिति से विचलित नहीं होना है. आप प्रयास कीजिए समझाने का, मनाने का, लेकिन फिर भी वो आपको सम्मान नहीं दे रहा है, अनादर ही कर रहा है, तो छोड़ दीजिए. Don't demand any respect. तो आपको मान की उससे अपेक्षा नहीं करनी है. Yeah.
बोलते भी नहीं तो लोग क्रोधित हो जाते हैं। फिर हम लगते हैं कि रास्ता पर इसलिए हम क्रोधित हो जाते हैं अपने अंदर। और भक्तों में भी देखते हैं कुछ होता है तो वही होता है क्या हम उससे हमको क्या करना चाहिए। When we go for book distribution, even without talking anything, people sometimes get angry over us. Or when we ask somebody for the guidance for the road where we want to go, still somebody will get angry. Even devotees also sometimes get angry without any reason. In such circumstances, how should we behave? See, the same thing. First of all, anger means emotions. So the first thing would be to reduce the emotions. तो वही वस्तु है कि क्रोध जो है एक प्रकार की भावना है, तो पहले तो भावना से हमें बाहर निकलना चाहिए. So when somebody is getting angry at you, so instead of getting angry back at him, that will be the wrong thing to do. यदि आपसे कोई क्रोधित हो रहा है तो आपको प्रत्युत्तर में उसके प्रति क्रोधित नहीं होना चाहिए. So you can just peacefully, I'm sorry, have I offended you? What did I do? तो आप शांतिपूर्ण तरीके से उससे पूछते हैं कि क्षमा कीजिए, मैंने आपको कुछ शोभित किया है, क्रोध हो जाए, क्या किया मैंने? No, if I did, I am really sorry. I didn't mean to. यदि मैंने गलती से आपके ऊपर कुछ गलत किया है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ. मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी. Then when you say that, then the person definitely will start thinking a little bit, because maybe he was expecting that you will get angry at him. यदि आप इस प्रकार से विवाह करते हैं कि वो थोड़ा विचार करने लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भी प्रत्युत्तर में क्रोध भरा आचरण अपेक्षा करता था. But since you didn't get angry, and now you're very calmly asking him, then he will calm down. लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से उससे जिज्ञासा कर रहे हैं तो वो शांत हो जाएगा. And he can explain himself why he is angry at you. और वो आपको बता सकता है कि वो क्यों क्रोधित है. And you can work the situation out. और इस तरीके से परिस्थिति को सुधारा जा सकता है. And it can be peaceful way. इस तरीके से शांति बनी रह सकती है. But if not, so he gets angry, you get angry, he gets more angry, you get more angry, and fists come, right? Punching each other. वो क्रोधित हो रहा है, आप भी क्रोधित हो रहे हैं, वो और क्रोधित हो रहा है, आप भी और क्रोधित हो रहे हैं, तो परिणाम होगा कि मुक्केबाजी होगी. And can be over nothing. और इससे कुछ परिणाम नहीं निकलेगा. Just we were not in control of our emotions. केवल हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर. So if somebody is angry at you, don't be angry at him. Just first, let's calm down the situation and then talk it out. तो यदि आपके प्रति कोई क्रोधित है तो आप उसके प्रत्युत्तर में क्रोध मत प्रकट कीजिए, पहले शांत होइए और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए. Yeah. Just इवनिंग टाइम गौर आते एक आदमी आए और वो भगवान के पास जाने के लिए बोले, तो यहाँ के जो व्रत थे उनको बोले नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं. तो सेम टाइम गए उनके घर पे गुजर करने के लिए, तो वो द्वार पे से भगाने लगे कि आपके मंदिर में ऐसा होता है, आप आगे नहीं जाने देते. तो हमने कुछ बोला भी नहीं, फिर और तो बोलने को उसी को मैंने परिस्थिति बताया. So one visitor came to temple and he was not allowed to enter the front of the railing during Gaurarati. So he was told that we should stay back. And when we went for book distribution, we went to his home and he was very angry. We just came back. You have to explain to him, okay, if you don't allow people during the Gaurarati coming in, so it's for everyone. You explain why is it happening, because you want the place empty there. People the pujari still goes there. So it's not just you. It's not about you. It's not personal. It's just how the system works in this temple. तो आप उनको समझा सकते थे कि ये आपके लिए विशिष्ट व्यक्तिगत ऐसा आपके साथ व्यवहार नहीं हुआ, ये सभी के लिए नियम है.
कि उस क्षेत्र को खाली रखा रहता है आरती के समय पुजारियों के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए. He was probably thinking that you don't like him and that's why you don't let him go. No, but you say it's not about you, it's for everyone. After the arati, okay, you can go and take darshan, but during the arati, don't go. वो हो सकता है, तो सोच रहा हूँ कि आपने उसके व्यक्तिगत उसी को ही नहीं जाने दिया, लेकिन आप उसको यदि समझाते कि ये सबके लिए नियम है, आरती के समय पे आरती के बाद जा सकते हैं. And it's also probably the way, how did you stop him? So maybe he was trying to go there and instead trying to explain to him, please don't go now, go after the arati. No, you cannot go. No, so if you do it like that, people get upset. और हमने उसको किस तरीके से रोका, यह भी महत्वपूर्ण है. यदि हमने उसको बताया होता कि कृपया आरती के बाद आप आगे जा सकते हैं, अभी मत जाइए, तो समझ जाता है. लेकिन आपने बोला नहीं रुक जाओ, तो व्यक्ति नाराज हो जाता है. Sometimes devotees can get very insensitive. तो कभी कभी जो है भक्त जो है असंवेदनशील हो जाता है. They can also like think, oh, I am a devotee, you are just some outsider, so you have to listen to me. It's the same problem. तो आप सोच सकते हैं कि मैं तो भक्त हूँ, आप तो बाहर से आए हैं, आपको सुनना ही पड़ेगा, वही समस्या है. So we should be humble, तो हमें विनम्र होने की आवश्यकता है. but firm. Okay, so that's the rule. You don't go there now, no, to take darshan. So okay, just wait. आप उसको विनम्रतापूर्वक समझा सकते हैं कि अभी आरती के समय है, आप उसके पश्चात जा सकते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए. But deal nicely. लेकिन अच्छे से व्यवहार. Respect others. Others will respect you. आप दूसरों का आदर करेंगे तो वे लोग भी आपका आदर करेंगे. Okay. You want this pipe for the? I wanted to know, Maharaj, that how do one set their own boundaries in terms of fulfilling others' expectations? So I'm asking this because related to my mental peace, because there are many toxic people, narcissists, self-obsessed, and those are none other than so-called my relatives, because I'm under certain obligation. So, how to deal with that? See, first of all, then you should ask, okay, what is their expectation from you? And then you see whether you can fulfill them, whether it is based on Guru Sadhu Shastra. Man, if it's not, so you say, well, okay, I can do this, but I cannot do this because this is not my dharma. You have to be just very down to earth. You have to explain it. Try avoiding the emotions. Because they are, somewhere they are control freaks and power freaks. So they try to, just because I'm under some obligation, they directly try to dominate me, and then it's very difficult for me to handle the situation. Because I belong to a Kshatriya family, non-veg eaters family, and I'm the only one practicing. Mm-hmm. So that crushes their ego. That how could she do it? So same thing. Try to diffuse the anger or the emotions. How did I offend it? What is the thing that actually bothers you the most? I am just practicing Krishna consciousness as our ancestors were doing. Our ancestors were the Kshatriyas. So then why were they Kshatriyas? Who is the Kshatriya? Kshatriya is who is giving protection. Yudhishthira Maharaj is the perfect Kshatriya. Absolutely. So like that, just explain to them, actually, where are we coming from? So diffuse the anger, diffuse the emotions. Work on that. And then if you do that, then there is a more chance that they will accept what you do. Okay, madam. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.
The idea is not supposed to become angry. But there is no forgivable. Anger comes. Yeah? Forgivable. Not forgivable. So, yeah. So, we are expected not to get angry, but sometimes anger comes, without reason, we cannot control it. तो ऐसी अपेक्षित है कि हम क्रोधित नहीं हो, लेकिन फिर भी हम क्रोधित हो जाते हैं, तो क्या करें? So that's because of the anarthas. So only devotional service can help us with that. तो ये एक अनर्थ है और केवल भक्तिमय सेवा से ही ऐसे अनर्थ जाते हैं. Chanting the holy name, and when the situation comes that you should get angry, then think about before you get angry. Maintain your intelligence working. Okay, I'm not supposed to get angry. Okay, but he is making me angry. Okay, anyway, I'll walk away, or I'll just stop talking to him, or something. Figure it out with the intelligence, because if you don't do, the mind will take over and you will get angry. We not follow the procedure, the devotional procedure properly. Yeah. There is one question mark told you. If a brahmachari is practicing doing his sadhana bhakti properly, and if he does suicide, what will happen to his consciousness? Well, see, he was meant to be here utilizing the body for a certain period of time. And within that, he was supposed to achieve some goal. Now, when a person commits suicide, then he is still going to be around as a subtle living being until the time when expires. Whatever was his given time. And then after that, then he goes forever. The destinations may be there. So as a devotee, he have done many pious activities. So then he will get to taste or to get the results of his pious activities. So he will probably go to some heavenly planets. But then he will also face the consequences, because committing suicide actually for a devotee means you are doing brahmahatya. So you also get consequence for that. प्रभुजी का प्रश्न था कि यदि कोई ब्रह्मचारी साधना कर रहा है लेकिन अकस्मात वो आत्महत्या कर लेता है तो उसका क्या परिणाम होगा? महाराज ने बताया कि मनुष्य शरीर एक निश्चित अवधि के लिए किसी कार्य हेतु मिला है, कुछ वर्ष साधने के लिए. यदि कोई व्यक्ति बीच में ही छोड़ देता है तो उसको उस समय तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा, और उसके पश्चात क्योंकि वो भक्त है तो उसके पुण्य कर्म में का स्वर्ग रहेगा. लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो भक्त था और उसने आत्महत्या की तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा, तो उसको भी इसको भोग करना पड़ेगा. So you get both results. Both you have to, the good and the bad, and you have to face the consequences for both. तो उसको दोनों ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अच्छे और बुरे दोनों, पुण्य और आत्महत्या दोनों. Now, if that happens, that the devotee maybe he did commit suicide, but then by that he got purified, the mentality actually got purified, then he may not face the consequences. तो यदि वो आत्महत्या करता है और उसकी मानसिकता से वो शुद्ध हो जाता है तो हो सकता है इसको परिणाम नहीं भी भुगतना पड़े. And you see, sometimes for devotees, elevated devotees, sometimes facing difficulties in the devotional service or devotional activities that were caused actually by the Navaparat previously committed, he cannot move forward. तो हम देखते हैं कि कोई बहुत ही बड़े वैष्णव जिन्होंने इस तरीके से कार्य किया हो तो उन्होंने पहले नाम अपराध किया होता है तो वो भूत प्राप्त होते हैं. And since he cannot move forward, then he feels that there is no use
and then okay, he commits suicide. इस तरीके से वो आत्महत्या करते हैं। But he gets purified by that. Chota Haridas. उदाहरण है छोटा हरिदास जी। There is one or the Siddha Baba, no, in Vrindavan. His name was Krishna Das Baba. Then he was on already like higher platform. He was able to get perceive the pastimes of the Lord. तो एक सिद्ध बाबा थे कृष्णदास बाबा, वो बहुत ही उच्च स्तर के भक्त थे और भगवान की लीलाओं की अनुभूति कर पाते थे। And now Srimati Radharani, she would sometimes appear in his dreams. और श्रीमती राधा रानी कभी-कभी उनके स्वप्न में प्रकट होती थी। But he wasn't sure whether it's real or not. लेकिन उनको निश्चित रूप से नहीं पता था कि ये वास्तविक है कि नहीं। So it still wasn't very clear. तो ये स्पष्ट नहीं था। And one day, then so he was accepted, among the Krishna Sakhas or Sakhis. तो उसको कृष्ण सखा या सखी के रूप में स्वीकार किया जाता था। But not fully developed. And then one day, he saw some devotees, from Dwaraka, and having, the branch Shankha Chakra, and he liked it very much. So he thought, let me go and get it also, because it looks nice. तो उनका संबंध पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। फिर उन्होंने एक बार द्वारका के भक्तों को देखा जो शंख चक्रधारी थे, तो उनके प्रति आकृष्ट हो गए और उन्होंने वैसा ही रूप चाहते थे। So he had done it. He comes back to Vrindavan, but he is not getting any visions or any more dreams about Radharani. और इसके पश्चात उसको और कोई स्वप्न इस तरीके से या दृष्टि नहीं मिल रही थी जिसमें राधा रानी या अन्य वृंदावन की लीलाएं प्रकट होती थी। So one day, again, Radharani appears in his dream, and she tells him, "You are not in my camp anymore. You are in Satyabhama's." तो एक बार राधा रानी उनके स्वप्न में आती है और बोलते हैं कि अब से तुम हमारे दल में नहीं हो, तुम सत्यभामा के दल में हो। Then he was so disturbed. He didn't know what to do, but that was it. और उससे बहुत ही विचलित हो गया, लेकिन उसके बाद उसको कोई दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। He could not do anything. वो कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। So then he just sat down, and went into deep meditation. तो वो एक स्थान पर बैठ गए और गहरे ध्यान में लग गए। He invoked a fire, और इस तरीके से उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की and he burned himself. और अपने आप को भस्म कर दिया। He was burning, I think, they said that he was burning for 2 weeks, 14 days. तो ऐसा कहते हैं कि वे 2 हफ्ते तक जलते रहे। So he got purified, और इस तरीके से वे शुद्ध हो गए। and then he is a Siddha Baba, so he is one of the most elevated in Braj. So it's understood that he achieved the highest position. क्योंकि वो सिद्ध बाबा थे, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। So he like a sati, right? She also committed suicide by invoking fire. जैसे हम भागवतम में सती का उदाहरण देखते हैं कि उन्होंने भी अग्नि प्रज्वलित करके आत्महत्या की। So that kind of purifies. But like a jumping under train or jumping under car just because that doesn't purify. That's sinful.
तो ऐसे महान वैष्णवों की क्रियाओं से वे शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई प्रेम के नीचे आके सुसाइड करे या हार के नीचे आते तो उससे नहीं होगा। Pandavas also committed suicide, पांडवों ने भी एक दूसरे से आत्महत्या की, thinking about Krishna, no separation from Krishna, just walking to Himalayas until they drop. कृष्ण से वियोग का चिंतन करते हुए वो हिमालय की ओर चलने लगे, That's purifying. तो इससे उनका शुद्धिकरण हुआ। They didn't jump off a cliff or some mountain. ऐसा नहीं कि वे पहाड़ी से खाई में कूद गए। No, sometimes people, no, the devotees, no, they may be very sick. They may be very sick, right? कभी कभी भक्त बहुत रुग्ण अवस्था में हो सकते हैं And it's not treatable. और वो असाध्य रोग होता है। So they decide that they will not eat and drink anything. वे निर्णय लेते हैं कि वो कुछ खाएं पिएंगे नहीं। Also, you can say committing suicide, but that's very auspicious. तो कह सकता है कोई कि अरे ये तो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका शुद्धिकरण होता है। They peacefully leave the body. शांतिपूर्ण तरीके से शरीर छूटा है। So, it's not suicide, it's suicide. Each one is different. What actually, why you need to do it. तो कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, इससे बहुत भेद होता है। Yeah? Hare Krishna. Jai Gruntaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Jai Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Thank you for your kind association. Please keep in your blessings and prayers now that I'm to be probably for a higher purpose. Raghuram Krishna helps me. See what you do. Just